Whoa, good morning. Hello YouTube, hello you lovely people. Welcome back to the channel. Welcome to Raj RideStories. This is Raj, आपका host. Today we are heading to Goa to attend the Rider Mania 2022. 2016 and 2017 में मैंने attend किया था. 2022 में the moment I've seen कि Rider Mania होने वाला है तो immediately I thought I will go for the event and मैंने event का टिकट्स बुक कर दिया है. तो सुबह हम लोग निकले थे घर से अराउंड लाइक 5:15 और घर से राइड करते करते हम लोग टुमकुर तक पहुंच गए हैं. टुमकुर के पास यहाँ पे टुमकुर टोल के पास रुके हैं और एज यूजुअल हमेशा हम लोग यहीं पे रुकते हैं टू हैव अ गुड चाय. वी हैव कवर्ड लाइक समथिंग 73 किलोमीटर्स और यहाँ पे रुके हैं. बहुत सनराइज होने वाला है जैसे कि आपने पीछे देखा होगा. बहुत ही बढ़िया मतलब क्लाउड्स लग रहा है. सन का जो रेज होता है वो ऑरेंजिश वाला वो दिख रहा है स्काई में, तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है. अपना भाई को भी लेते हैं वीडियो में. ये भाई है, भाई हाई बोल देना. ये हमारे सब्सक्राइबर भी है और जब भी हम लोग यहाँ से गुजरते हैं तो यहीं पे रुक के चाय पीते हैं. बढ़िया मस्त चाय बनाते हैं भाई. और ये है अपना मेरा भाई जो हम लोग साथ में एक ही गाड़ी में इस बार जा रहे हैं अपना KTM 390 एडवेंचर में. दो बाइक्स हम लोग सोचा कि चलो नहीं चाहिए तो हम दो ही हैं तो सोचा कि एक ही बाइक में चले जाते हैं. तो नॉर्मल हाईवे होगा तो ज़्यादा मतलब ये हाईवे वाला मैं शूट नहीं करूँगा क्योंकि मेरे वीडियोस में बहुत सारे बार हम लोगों ने हाईवेस वगैरह ऐड कर दिया है. तो अभी हम लोग है सीरा टोल गेट पे, तो अभी हम लोग कम से कम 112 किलोमीटर्स कुछ कवर किया और यहाँ पे रुके हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए. और ये है आपका तट्टे इडली. ये तट्टे इडली बहुत फेमस है इस तरफ. और बस यहाँ पे एक छोटा सा होटल दिखा हम लोगों को टोल के बाद इमीडिएटली. हम लोगों ने सोचा कि ब्रेकफास्ट कर लेते हैं क्योंकि ब्रेकफास्ट कर लिया तो इसके बाद एक ही दिमाग से आप एकदम चलाते चलाते गाड़ी जा सकते हो. और एकदम बस गोवा जो है 580 किलोमीटर्स है बैंगलोर से. नहीं 630 किलोमीटर जा रहे हैं हम लोगों को. आज है सैटरडे 19 ऑफ नवंबर. 18 से राइडर महीने शुरू हुआ है तो कल हम लोग नहीं जा पाए. आज जो है शाम हो जाएगा जाते जाते. आज शाम और कल का जो भी इवेंट्स वगैरह है पूरा कल करेंगे और मज़े लेंगे. और सो फार द राइड हैज़ बीन गुड, नथिंग मच एक्सेप्ट यू नो जस्ट राइडिंग ऑन द हाईवे. पर इडली जो है बहुत बढ़िया बना है. इडली या फिर ये जो आपको पोटैटो को करी है ना बहुत बढ़िया है. सो गाइज अभी हम लोग है इन धारवाड़ जो कि लाइक यू नो वी हैव कवर्ड समवेयर लाइक 440 किलोमीटर्स. पंगा ये हो गया था कि ये जो प्लेस है जहाँ पे होटल, ये होटल में जहाँ हम लोग लंच के लिए रुके हैं द होटल नेम इज़ रम्या रिसमेशा. वी हैव लंच हियर. फूड काफ़ी अच्छा रहता है यहाँ पे. तो ये एक्चुअली चौकी पे पड़ता है तो पता नहीं चौकी पे हम लोगों ने किस तरह मिस कर दिया है. तो आगे निकल गए थे हम लोग. कम से कम लाइक 14 किलोमीटर चले गए, वापस फिर 14 किलोमीटर आए हैं. द टाइम नाउ इज़ लाइक यू नो 1:15 कुछ हो रहा है और यहाँ पे लंच करेंगे. और यहाँ से जो हमारा होटल है समवेयर लाइक 170 किलोमीटर जो कि 4 घंटे का रास्ता दिखेगा क्योंकि ये घाट वगैरह पूरा पड़ता है तो थोड़ा टाइम लग जाता है. बट अदरवाइज द राइड हैज़ बीन फैंटास्टिक सो फार. द रोड्स हैव बीन सुपर्ब. टिल हुगली एज यूजुअल बैंगलोर से हुगली का रास्ता तो जो बहुत ही मतलब मक्खन वाला रास्ता होता है.
सो ओके गाइस, अभी पहला काम ये है कि हमको यहाँ पे एंट्री करवानी है। तीसरे दिन आ रहे हैं हम लोग एंट्री करवाने के लिए। दैट्स अ स्ट्रेंज थिंग। लेट्स सी व्हाट वी गेट इन द किट नाउ। तो हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट कर दिया। सो वी गेट दिस बैंड हियर। ये बैंड आपको मतलब 3 दिन जब भी रहोगे आपको यहाँ पे कैरी टू गेट द एंट्री इनटू द एनी ऑफ द प्लेसेस हियर। दैट्स वन थिंग। एंड सेकेंडली वी गॉट दिस किट हियर। तो किट में है व्हाट दिस इज द फर्स्ट टाइम वी गेटिंग द किट लाइक दिस एक्चुअली। अदरवाइज दे यूज्ड टू गिव अस सेपरेट इन अ पैक काइंड ऑफ अ थिंग. So in the kit you got this t-shirt. I have seen a lot of people wearing this t-shirt, so let me just open this t-shirt for you and show. Who's going to get out the whole shirt? So there you go. That's the t-shirt here. Okay, so that's the t-shirt front and the back. All right. So this looks super cool actually. And this is the bag here. And there we have it now. We have Lady Rider in the top 3. So that's the thing. A lot of activities are happening all over here. So what we do is we just go around. I'll show you a lot of things what's happening in this Rider Mania. At the time now is like 12:15 कुछ हो रहा है. और तो क्या करेंगे कि जल्दी जाएंगे अंदर कुछ देखेंगे हम. Hello. Hi. So after you finish off this, what are you going to do with this? It's gonna go to a public display, probably one of the showrooms in Goa. In the showrooms in Goa, is it? One Okay, of the so they showrooms. go as a showcase Yeah. for. Yes. Okay, Be okay. there for a bit. So you're going to finish off this today? Yes. Is it so? Yep. Oh, nice. So you look to the background, you can see the entire history of the Royal Enfield has been provided in summary. So there's a lot of history associated with this huge company, Royal Enfield. It's such a such a fantastic event. What gets organized here, and the way they organize the entire event is like commendable. That's the reason why, even though I don't own the Royal Enfield, I do like to come and take part in this. Just make myself available and soak myself in this experience. So that's the reason why I always come to Rider Mania. Guys, so पीछे आप जो देख रहे हो पूरा मतलब जो कस्टम मेड बाइक से रॉयल एनफील्ड के इंजन से जो बनाया गया है वो सारे यहाँ पे दिखाया देगा आपको. बहुत डिफरेंट तरीके का इन्होंने मॉडिफाई करके रखा है. एंड दिस एवरी टाइम इट हैपेंस इन द रॉयल एनफील्ड यू गेट टू सी सो मेनी वेराइटीज ऑफ मॉडिफाइड बाइक्स. And this is actually the entire lineup of the products. What you see here is actually from the custom world. So how beautiful they are. They are like cast. They are looking. Guys, so we are here at the racing. Battery is actually gone, almost dead. I'm trying to record as much as possible. और यहाँ से छप्परों को जाना पड़ेगा इवनिंग का सनसेट क्योंकि वो मिस नहीं करना है when we are in Goa. So वो प्लान अभी कितना हो सके उतना ट्राई करूँगा कवर करने के लिए. Number 141. Everybody are just gearing up. Bangalore! Over there. All the Bangaloreans make some noise! Yay! Number 6.
you can see, there are a lot of stalls all over here, the riding stalls or the accessories ones or whatsoever. You have everything, most of the good branded which are there in the market. They have on the stalls here. You can see the kind of vibes what's there here. We got at the Royal Enfield Rider Mania 2022. It's always been there and it's there in this year as well. And there is going to be a concert which is going to happen in the evening, so we will come back that. But for now, I think the sun is about to set, so we'll go to some beach, we'll catch up the sunset, fantastic sunset, spend some time over there, and then we'll come back. सो वो था हमारा सनसेट का एक्सपीरियंस आज एट दी वेगटार बीच मिनिया, जो वहाँ पे हिल टॉप हो रही थी, वहाँ से ये जो है लाइक 1.5 किलोमीटर कुछ था। और जैसे कि आपने देखा होगा ड्रोन शॉट्स, दैट्स माय ब्रदर हियर हु हेल्प मी विद टेकिंग लॉट ऑफ गुड पिक्चर्स फ्रॉम माय सोनी अल्फा 6400. थैंक यू ब्रो, एंड आई पोस्ट ऑल दीज pictures on my Instagram ID, Raj RideStories, and you can also check out my brother's Instagram ID, which is Bhaskar_travel. So he also posts fantastic motorbikes and the travel posts on his Insta handle. Beautiful colors what we can see now from the clouds, from the sky now. जब सनसेट हो जाता है ना, उसके बाद जो कलर्स पॉपअप होते हैं, दैट इज समथिंग ब्यूटीफुल ऑलवेज. मैं ना बैठ के बहुत सुकून लग रहा है एक्चुअली. में थोड़ी देर बैठना चाहिए. काम तो होता है, वीडियोस रिकॉर्ड करना होता है, कंटेंट बनाना होता है, सब होता है, बट समटाइम यू जस्ट नीड टू सिट, रिलैक्स, सल्ट योरसेल्फ इनटू दिस नेचर. भागदौड़ होता ही है, बट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जस्ट टू कनेक्ट योरसेल्फ विद द नेचर. And that's the entire view of the Delta beach. We are on the top of the hill, and the plan अभी ये है कि हम जाएंगे वापस राइडर मीनिया के पास, थोड़ी देर टाइम स्पेंड करेंगे वहाँ, देखते हैं कि अभी और क्या हो रहा है. वो गाइस, वी आर बैक एट द राइडर मेनिया. और हम गए थे अंदर मोटोसॉनिक के पास, वहाँ पे कॉन्सर्ट हो रहा है, वहाँ पे कॉन्सर्ट हो रहा है, मतलब अलग अलग जगहों पे कॉन्सर्ट्स हो रहा है एक्चुअली. तो जो हमने देखा है भाई, मतलब बवाल वाला था, बहुत बढ़िया लगा मुझे. आफ्टर लाइक लॉन्ग टाइम, कवाली टाइप, गजल्स टाइप, मस्त था एकदम. आई रियली एंजॉयड इट आफ्टर लॉन्ग टाइम यार, सीरियसली. तबला बज रहा था वहाँ पे, शहनाई बज रहा. अरे क्या बात है, क्या बात है. मतलब ये सब जो होता है ना म्यूज़िक, ये बहुत बढ़िया म्यूज़िक होता है यार, सीरियसली. सो अभी हम जा रहे हैं दूसरी तरफ, वहाँ पे क्या हो रहा है मुझे पता नहीं. वहाँ चलते हैं, फिर देखते हैं कि वहाँ पे क्या हो रहा है. मैं आपको दिखाता हूँ जल्दी.
हलचल मचानी है। Let's see some fucking hand. Thank you so much. Thank you. Cheers, everyone. It's been an amazing weekend. Thank you, all of you guys. They've done a damn good job. Look at this, man. Look at the lineup. Divine yesterday was bloody divine, wasn't he? ಆಗುತ್ತಿದೆ ನೋಡು ಆಡುಗುರು ನೀನಾಡು ಜೋರಾಗಿ ನೀನು ನಿಂತಿದ್ದೀರ ಆಡು ಜೋರಾಗಾಡು जग रंगीला सब रंगीला तन रंगीला Whoa, that was like कैसा था भाई? Superb. एकदम मस्त था ना, बहुत एनर्जी। Yeah man, definitely next year again. मतलब इतना ऐसा बीट्स मार रहा था, ऐसा मतलब नाच के क्या full enjoy किया मैंने। बहुत मजा आ गया सीरियसली। हो सकता है कि थोड़ा ज़्यादा मैंने दिखा दिया, but that was necessary because you know that's how good it was. So hello. So seriously, I should say that it was like fantastic. We got to leave because we have to move towards the room. So बाइक अभी पार्किंग पे है ना, तो वहाँ से निकालते हैं। हम लोग निकलेंगे यहाँ से, कुछ डिनर हो सके तो कर लेंगे और रूम जाके थोड़ा बहुत सामान वगैरह जो है पैक करना पड़ेगा। नाउ इट्स टाइम टू हेड बैक टू बैंगलोर। आई कैच यू इन सम टाइम। तो हम पहुँच गए अपना होटल अभी, और बीच रास्ते में हम लोगों ने अपना डिनर कर लिया है। डिनर करने के बाद अभी हम पहुँच गए। अभी टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट लगभग 12। ये हो गया था कि सुबह हम लोगों ने चेन लूप खरीदा था, वो निकला है रस्ट क्लीनर करके। हम चेन लूप करते जा रहे थे और पता नहीं मतलब ओके का जब चेन लूप में करता हूँ ना, आई मीन इट काइंड ऑफ क्रिएट्स दैट वाइट लेयर, बट पता नहीं चले पानी की तरह बह रहा था। तो नो मेरे माइंड में थोड़ा डाउट आया कि क्या है करके। फिर जब हमने नाम देखा था उस डब्बे के ऊपर, वो था रस्ट क्लीनर। यार वो पंगा हो गया। अभी चेन का लगभग हम लोगों ने 680 किलोमीटर्स कुछ चला दिए गाड़ी अभी। एंड कल थोड़ा फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कहीं पर भी लूप मिले तो हमको लूप करवाना ही इम्पोर्टेंट है। पूरा सामान जो है हम लोगों ने पैक कर दिया है ताकि सुबह उठने के बाद ये सब पूरा झंझट जो है वो ज़्यादा ना रहे। अभी टाइम हो रहा है तो आई विल जस्ट गो एंड टेक अ गुड नैप। आई होप आई गेट अ गुड स्लीप एंड आई विल बी फ्रेश फॉर tomorrow's almost like 12 to 13 hours of a long ride. तो हम पहुंच गए हैं टुमकुर से थोड़ा आगे, प्रॉब्ली घर के लिए मे बी अनदर 45 किलोमीटर कुछ होना। अभी टाइम हो रहा है 3:40 हो रहा है। तो ओवरऑल हम लोगों ने कम से कम 560 या 70 किलोमीटर अभी तक कवर कर चुके हैं। सुबह निकले थे हम लोग 6:30 को और उसके बाद एकदम बोले तो क्रूज करते जा रहे। रोड्स काफ़ी अच्छा है। ऑलराइट, सो लेट मी हियर फ्रॉम माय ब्रदर। भाई कैसा लगा था राइडर मेनिया? सुपर वंडरफुल, बहुत बढ़िया था ना? बहुत बढ़िया था। Yesterday party is just rock. एकदम बोले तो लाइक झक्कास वाला पार्टी ऑर्गेनाइज किया उन्होंने, बहुत बढ़िया था। मिस्ड आवर गाइस, चलो अगर वो लोग होते तो टुडे में डबल बोलना सब बहुत मसी हो जाता। और बट अदरवाइज वी आर
और सारे राइडर्स जो भी मतलब राइडर मीनिया में थे सब वापस आ रहे थे बैंगलोर की यार, वो अलग तरफ। level कितने का, लोग bikes, दिख रहे थे, bikes, पूरा bikes, रॉयल bikes, एनफील्ड bikes, मतलब पूरा भर गया था। पेट्रोल बंक वाले बोल रहे थे भाई सर इतना बाइकर्स आ रहे, इतना बाइकर्स कहाँ है, तुम लोग राइडर मीनिया हुआ था गोवा में। Pretty much that's what I have to cover in this particular part of this vlog. Hope you would have enjoyed. I've got the glimpse, the entire stuff what needed from the rider mania. I managed to cover it in one day what I was there, because you know पहले 2 दिन तो मैं मिस कर दिया. So thank you very much for watching this entire vlog, and if in case you're not subscribed to the channel, I would request you to kindly do so and also hit the notification button. I'll see you again in the next video. Till then, live life, keep traveling, follow your passion. Signing off, Raj. I'll see you again in the next one. Bye bye, take care, Jai Hind.